So everybody can hear me? Yes, sir. Good morning. So here we go. So one more chap is supposed to come. Okay, all four are here. So we'll begin. There's a different way of operating. I thought I'll give you a little brief about how we are going to go about it. So there is a 1-year program in FTI for editing, and then there is a 3-year program. So just tell me, same is also for SRFTI, I suppose. There is a 3-year program. And then for electronic digital media, that is a 2-year, or it is 1 year. It's 2-year program, sir. 2-year, right? Okay. So, but more or less, they have a different nomenclature. The number of exercises are different because the time duration is different. So that is the reason. In 3-year program, there's a common course of 6 months, and then you get into the specialization. And if you're doing an acting course, if you're doing a 3-year course, then 1 year is a common course for all the 3-year program in FTI. There it is 2 years, so the format is a little different. So just give me a brief. First of all, switch on your videos so that I can see your faces. This is not the way to work. I can switch off the thing, otherwise it doesn't work. Okay. I want everybody to switch on the videos. Everybody means everybody. All 4 students has to switch on their videos. You cannot go to sleep and I keep talking here with a blank screen. That is not permissible. Okay. Good morning, sir. Good morning. 2 more people. Quickly switch on your videos. Akshay Kumar, if you are hearing me, switch on your video. Yes. If you are hearing me, switch on your video. Would you do that in a FTI interaction program? You would not do that, right? So if you are not going to do that, why are you doing it here now? One more chap. Somebody called Satyajit. Satyajit, are you around? If you're not around, I would keep you out of this discussion. As simple as that. Satyajit, are you hearing me? Sir, I guess he's using a desktop. That's why he's not turning on. He's using what? Desktop, sir. Without a webcam. Will you do the same with the FTI? Would you do the same when the FTI interaction would happen? No, I would guess. Yeah, so as simple as that. Okay. Anyway, so on the day 1, I told you where to place your camera. First thing I told you where to place the camera. So guy in the center, you could see the fan up there. Can you see the fan? Mr. Denzel Washington? Yes. Did you learn it now? Okay. So first thing is, I told you how to place your camera so that your light on the face has to be much more higher than the background. This is how FTI would come to know your common sense. There's something called common sense. Forget about editing sense, lighting sense, cinematography, direction, other thing. The first thing is they want to know that are you really have the basic understanding, basic of everything. And that's why in FTI for 3-year program, there is a common course. So that you come to know each and everything over there. And remember, you are not being selected so far. The 40 students, only 10 wise people would be in, 30 would be out. So how you are going to prove that you are a wise man? That is the whole game. So they don't expect you to be an editor. First thing is very clear that they don't expect you to be editor. But at the same time, they want to find out your aptitude for it. There are 2 things which they are looking at it. One is your intelligence level
and second is the imagination level. Both are different. I know many people who are very intelligent, but they don't have imagination power. And that is where you distinguish from a person called A, B, C, D. Out of 40 or 10 who get in are the people who have both these qualities. Okay. So online it becomes a little more difficult for them to evaluate rather than face to face, because there is a vibration when it is a face to face. But even if online there is a face to face, but still there is a little barrier between you as well as the evaluators. So very often people ask what they are going to ask. I have loaded an interview over there on the website. If you have seen that interview, it is fine. If you have not seen it, please go and see it. It is the ex-student who got selected in FTI for the editing course. All three of you have seen that video? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So if you have seen it carefully, then you would also realize that it is not only about the editing. It is not only about the editing. They could ask about the music also. They could ask about anything which is not directly linked with the editing. For example, as an editor, if you have, there are 4 shots over there of the same activity, same thing, 4 shots. One is NG, second is NG, third is NG, 4 is NG, and out of 4 NG, 1 shot you need to pick up. While you are editing, 1 shot need to pick up. So my question is, what will be your criteria to pick up 1 NG shot out of 4 NG? That is my question. So there are many things. When we think about editorial point of view, then we have to find out whether that particular shot justifies the action depicted in the scene or not. Action That's is always there in the 4 shots, but all 4 are NG. So how you would figure it out which NG shot you're going to use among the 4? we can check out the composition of Composition the is one thing. Yes. Composition, which is a better shot composition, could be one reason. Second, so this is just a imaginative, on the spot. I thought of this question before I started it. I did not have an idea what I'm going to ask you. I just on the spot prepared this question. There could be many more questions which they are already ready with, because they are going to evaluate you people. Okay. So first you need to find out why all 4 shots are NG. When you say it is a NG, why it is NG? Whether the dialogues were not correct, or there was a fumble, or the camera did not stop at a right point, or the focusing was the problem. So what was the problem in all the 4 shots? Whether the performance of an actor was not good because of that. So a NG take can be for various reasons. Okay. Now you would find out which NG take you will still manage, and audience will not come to know. Audience will not come to know. Suppose the camera was supposed to finish here and the actor carry on and camera carry on. So you know that if I cut it over here, I will still manage. Though at the time of taking, director decided that it's an NG take, and somehow the time ran out and they thought we will discuss later on and we'll figure it out something out of it. So they didn't have a okay take. Sometimes it do happen because rain starts, or some electricity goes, or the actor has gone. There are various reasons you could not complete the whole take. Sometimes some strange reason happen because of that. A situation like this happen. It normally out of 100 cases, 98 cases or 97 cases, there's always a okay take. Sometimes there are 2 okay takes. Sometimes there are 3 okay takes. So when there are 3 okay take, again the same question is there. Which one you are going to choose? So there is an assistant director sitting up there. Then there is a continuity sheet over there. You will preview all the 3 shots.
And there was not enough time to find out which shot was good among the 3 okay take. Now you have a lot of time to figure it out if the performance is better or if there is some, not just the performance, but the sync of various things, something will fall, so the light will come and this will happen. So there is also a synchronization, particularly in advertising. There's a synchronization of so many things happens. The light will come, rain will come, dog will jump from there, and there could be 2, 3 more activities also. So all the sync is perfect in a one take, another it may not be, another has perfect sync plus the performance also. So there are so many factors by which you decide. There are other things which are very commonly talked about and discussed are called rhythm and pace. There is something called rhythm and pace. Cutting on beat. I'm not going to explain each and everything to you. I am just giving you certain ideas that on the basis of which they are going to ask you anything. Okay. So is the rhythm is built up in the time of editing, or you have to be more careful at the time of shoot, or you can do it both the places. Same is with the pace also. Can the pace need to be controlled at the time of shoot, or it can be built up at the time of editing, or it can be slowed down at the time of editing? For example, today promos are very popular. Very often you will see a film will come and before that there's a teaser, then there's a promo, then there is a this, and there is a stage 1, 2, 3, 4. There are stages. Stage 1, stage 2, stage 3. First there is a teaser, then there is a little more detail over there. So my question is the editor of the film is supposed to edit the promo also? Or there should be a different person? If there is a different person, what is going to be the advantage? If it is going to be the same person, what will be the advantage? So there are a couple of interviews. I'm not sure whether I have shared with 2 of you people. Have I shared some 3, 4 interviews of the Word file of Asim Sinha and other people? No, sir. You have No, not sir. received. What's your name? Sir Akash. Once again. Sir, I have not received those Just a files. moment. Let me write down. So Akash do not have. Then who else don't have? Me, sir. Utpal. Utpal don't have. Akshay has already this. Satyajit, God knows where he is. I shifted this timing only because of him, because he has an interview today at XIC. So I thought I'll shift to help him out, but for some reason he has gone for a walk. Never mind. So I will share 5 important editors interview, which you will not be able to find on the internet because they are not loaded over there. And they are very, very important people, particularly for FTI and SRFTI also. There's one lady from SRFTI who has done many films for Yashraj Films. She is a graduate from SRFTI. Then there is Shikhar Prasad, who is not from anywhere, but is big guy in terms of as an editor. Most of the Mani Ratnam film he has edited. All these names you should be familiar with. If I ask you who's your favorite editor, you can't look at the wall and say, I don't know. This question called I don't know out. If they are asking something, it means you are supposed to know. They may not be asking a feature of FCP 10, that which particular feature of FCP 10 will give this thing. They will not ask this because that is a software knowledge. But there are so many things connected with editing, which at the level of entry level, you are expected to know. So if I say that I like the Shikhar Prasad, for example, then I should be able to substantiate my answer why I like specifically that particular person's work. And then obviously not every work, maybe 1 work or 2 work, you can always, and it's very difficult, by the way, to talk about somebody's editing work. It is not tangible. ये नीले रंग का पेन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरे को white रंग की शर्ट अच्छी लगती है,
किसी को रेड लगती है, किसी को कुछ और अच्छा लगता है. So it's a very difficult domain of editing to talk about that why do you like his editing rather than somebody else. It's very difficult. So, but there is always an answer. There is always a answer. Whether the evaluator will like the answer or not, that is a different case. But he will at least understand that you have some understanding about editing. Okay, and that's what they are looking at it. And it is like a intangible thing. It's very intangible in the sense you can't catch it and tell it. Like this is cinematography is still relatively much more easier to discuss that this is a good cinematography or bad cinematography, because I come from that background, so I understand that. But editing is a little more trickier to tell why do you like a editing of a Shrikar Prasad and not of Zaveen Merchant, for example. I'm just giving an example. But everybody has their own reasons. But only when you have studied a particular style of a person very carefully, or maybe you have read his interviews, 5-6 interviews. Not so much of a material is available on the internet, by the way, on the Indian editors at least. International editors, yes, people have done the work of Christopher Nolan's editing pattern, if you have studied over there. So those kind of a thing, they might ask you, have you seen any film of, just now since this thing is being cropped up. So Christopher Nolan, for example, if you look at his film, they are very strangely organized, which is, I would say, done at the editing level. But it is not editor's call, by the way. It is not a call of the editor कि footage लेके आ गया Christopher Nolan, अब तुम edit कर दो. अब वो Christopher Nolan का film किसी और आदमी को दे दो जिसने वो देखा ही ना हो उसका हो, वो कुछ और बना देगा उसमें से. Why? Because it is his mind which he has decided the timeline. So it is very important for you people, if you have a time for, say for example, for FTII, only you have received the detail about the SRFTII only. So you still have a time. So there are a couple of videos which discuss his editing timeline. There are a couple of videos and a couple of channels are there where you go and look into the editing pattern of that. So, but again, it is, I would say, it is not the editor's call. It is a call of the director. But then what the editor is doing is also a question. They may ask you that suppose, I'll tell you, for example, I messed up in a film, documentary film, which was a dance film. And dance is something which is cut on the action. And if you're shooting with a single camera, so in a close-up shot, the hand of the dancer will go like this, from here, 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 here. And in a long shot, the bloody hand is not here. It goes from here, 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 and here. So how an editor is going to cut a shot from at this position, any of these positions, from something which is the long shot is not here. So the match cut is very difficult to do of the same action. And mistake I committed is I took the same shot 2-3 times. Long shot, mid shot, close up, thinking that I would be able to edit in an edit, and I did not realize. And Asim Sinha was the editor, and that time I realized, shit, I messed up the whole damn thing. It should have been with a 2-camera setup, because the 2-camera setup, the action is same, so it can be easily cut. But if you're taking the same action with a long mid close up and in a long shot, mid shot close up, the position of the hand is not going to be exactly the same. It was a nightmare for an editor. So their editor comes. If it is a 2-camera setup footage, editor will cut at any point, it will match. But if it is not the same action which is repeated exactly in a long shot and mid shot, it's too much of a problem. So there comes the editor's talent. When director will give up, editor will take over. And now you have committed, and believe me, the maximum rebuke, गालियां, अगर डायरेक्टर को कोई आदमी देता है तो एडिटर देता है, क्योंकि वो एक कमरे में गालियां बक रहे होते हैं डायरेक्टर को, तो इसलिए किसी को पता नहीं लगता है. बट एडिटर जितनी गालियां दे रहा होता है डायरेक्टर को कि क्या कचरा इकट्ठा करके लाया है ये आदमी, because it is not getting edited. It is not getting edited. So all the mistake of a director, you will also realize at the time of sound recording also, but maximum mistake you will come to know at the time of editing. And when there is a mistake
and it cannot be rectified now. So there comes the editor to save the situation. A. B. You are not editing every day. As a director, you have done one film in a 3 year, sometime 2 years, sometime 4 years. So you are not every day editing, right? But an editor is editing almost, I would say, if a busy editor is there, they're busy all the time. All the time in the sense, I would say, if you're doing a 3 feature film in a day, in a year, then your schedule is almost booked. So you as an editor are observing the footage, the mistakes, the cuts, the rhythm, the pace, the momentum of the film every day. But a director is doing once in a year or maybe twice in a year. So for his number of editing days are 40 or 50 or 60. And even if it is going to be a 60-day edit, he's not sitting in the editing room. Okay. Some director will prefer to come, give you the footage to the editor, and they will say, okay, you edit. I would come and look at it. Like Benegal. Mr. Benegal don't sit with us, Asim Sinha. But the problem, advantage in case of Sham Benegal is Asim Sinha is also there at the time of shoot. So he know if this shot is being taken, and now since there is a non-linear editing system is there, which means computerized non-linear from that point of view. So in the evening, whatever footage you have shot today, you will edit in the evening. So if there is some nonsense or something is gone wrong or some mistake is there, you could still rectify that tomorrow. That's an advantage. But if that thing is not there, and if you're editing after 2 months or 1 month or 1.5 months, now there is no way you can redo it. So this is an advantage. This could be asked to you as a question. As an editor, would you like to be on the set and edit in the evening, or would you prefer to edit later on? Now there is no rule. There is no rule that it should be like this or it should be like that. Okay. Some production houses don't want editor to go to Switzerland all the way and sit over there and unnecessarily add to the budget. But I would say in today's time, when there is a possibility that if you shoot today and you could also edit simultaneously in the evening, why not? It is just a matter of one person and one computer. That's it. And of course, additional expenses when there's a crew of 60 people are sitting in Switzerland, one more guy who's the head of one important department with, and believe me, a badly edited film, anybody can find out. You may not have bothered to look at it because most of the films which you watch in the cinema hall are not badly edited. They're well edited films. Maybe the film is bad overall. Actor performance is bad, idea is bad, songs are badly composed. But you as an editor, is well edited film. You as a cinematographer, well shot film. You as a sound recordist, a well designed and leveling and clarity of the sound is there. So as a technician, you have done a wonderful job. But the film is shitty, so you can't do anything. Okay. So as a technician, you are not able to notice the bad edit because they are not badly edited. And that's the reason. But if a film is badly edited, for example, by someone who's, and it happens sometimes. Sometimes very often you will hear कि rough cut जो है 3 घंटे का था and final cut जो है 2 hours 30 minutes. तो ये 30 मिनट का फुटेज जो एडिट हुआ था, रफ कट का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कचरा जोड़ डाल के बैठ गया. रफ कट का मतलब ये है कि इट इज माय फर्स्ट कट. ये मैंने जो फुटेज थी उसको मेरे हिसाब से जो कट करके होना चाहिए था, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो 3 घंटा होना चाहिए, 2 घंटा होना चाहिए, 2.5 घंटा होना चाहिए, जो तुम फुटेज लेके आए, जो मेरे हिसाब से फिक्शन की बात हो रही है, अभी डॉक्यूमेंट्री की बात नहीं हो रही है, फिक्शन के अंदर, फिक्शन में मैंने आपने बोला कुछ, फिर आपने बोला, फिर आपने कुछ बोला, फिर मैंने बोला, ऐसे ही होगा. ऐसा तो नहीं कुछ भी बीच में डाल दोगे. There is a sequence. Okay, there is a dialogue written over there. So there is an order which need to be followed. So there is more or less, I would say, a pattern is fixed. I'm using a word more or less. 95% of the situation is more or less fixed. 5% of the situation is there where you can play around a lot. Like for example, dance. In a dance situation, if the same footage is being given, you can edit in a 2-3 different versions, and that will still work. But when it comes to a dialogue, particularly Indian dialogue situation, also in a, say for example, there's a fight sequence.
Fight sequence also can be edited in different ways, because you might take out some chunk which is some action happening over there and nobody will come to know, because nobody know what is supposed to be there, because it is not a dialogue. I said this, now you are supposed to speak. You said something, then now I'm supposed to speak. So there is a pattern, there is a fixed system is there. But when it is a fight sequence, you don't know what action is going to happen. So situation like fight sequence, if it is a 7-minute fight sequence is there, you may chop some bloody chunk and nobody will come to know that chunk is being taken out. So question is, why a rough cut is 3 hours and the final cut is 2 hours to 30 minutes? Sometime you will also hear in a Cannes Film Festival, it is a director's cut. Very often you will hear a word, then Cannes Film Festival, Francis Ford Coppola presents Apocalypse Now, the director's cut, which is a 4 hour. बाकी का कहां से आ गया 1 घंटा या 1.5 घंटा कहां से आ गए? ये 1.5 घंटा पहले था, जब ये फिल्म बनी ये 1.5 घंटा था, बट प्रोड्यूसर ने बोला लोग सो जाएंगे 4 घंटे में, तो दिस फिल्म कैन नॉट बी मोर देन 2 hours, फॉर एग्जांपल. So they chop the part here and there and whatever crisp. Same with the Cinema Paradiso. Cinema Paradiso also has a 2 version. One is a Cannes Film Festival version, another is the theatrical release version. If you see on the net or somewhere here and there, you will find it. So these different versions of the same film, also in advertising, you will very often you will see a ad of a 1 minute, same ad of 30 minutes, same ad of 20 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 60 seconds. So the purpose is still served. So these are the various versions which are required as per the time slot of the television which they needed. So it does not mean that a 60-second version out of a film cannot be edited to a 30-second. In an ad it can be, music video it can be, but in a fiction it becomes difficult. There are certain, and that you come to know through experience. When you have edited a chase sequence, when you have edited a fight sequence, so you know that fight sequence I can reduce a little bit. In the chase sequence, I can reduce that falling part of this car and all that. So it's a very, very tedious process even now. Why? Earlier there was a 35 mm negative. Okay, so much of a two frame you cut and you can't throw the 2 frame, because after a point you might need those 2 frame back. So assistant editor job was a very difficult to maintain all these bins and very systematically. But today, because there is a technology, so everything is bloody digital. But the problem is in digital people keep shooting. So sometime 3 camera setup footage is there, and as an editor, you get a bloody 3-hour film and you get some 90 hours of footage, 80 hours of footage, 70 hours of a footage. For 3-hour film, 70 hours of a footage. What are you going to do? You become crazy. But that's how the people do it. So not simply because the digital technology has made the life simpler, it has also created an unnecessary problem. Number of shooting hours has gone high. People don't shoot very meticulously. When it was a 35 mm negative, people were very careful. 1 can will cost 12,000 rupees. So you don't fool around here and there just like that. But today it is hard disk. You can reuse it. So it doesn't matter. So there are advantages as well as disadvantages. The number of hours of footage is too much. For an editor, it is a nightmare to edit all that bloody footage of 70 hours, 80 hours into 3-hour film, or not even 3 hour, I would say 2 hour. 2 hour, if a film is more than 2 hours, it's too much of a problem for a producer, because then you also need the time slot on the cinema hall. Cinema hall time slot you will eat away 1 hour more. In that 1 hour, 30 minutes from here, or 20 minutes from there, and 10 minutes from there, a cinema hall can have one more show. So today, it is very, very important to think from the theater point of view also, because if your film is 2.5 hours, not many theaters would be interested. But if it is a 90 minute and 2.5 hours, 1 hour is gone. So that 1 hour from your film, 10 minutes from another film, 20 minutes from another film, he could have one more show also. So not to want to repeat that. So there are advantages and disadvantages. So I will send you these 5 interviews with you people, and
there are some aesthetic things which they would ask you about Eisenstein theory of montage, and there are a couple of other theories of the editing. So you need to also read about that. And it's very important that sometime if you read all those questions in these 5 interviews very meticulously, I have prepared all these questions, which I have interviewed these people over the 7-8 years. Read their answers very carefully. It is very crisp, the answer. There was little unnecessary thing in the when they were talking, but when they edited, that's an advantage. Editing is required everywhere. Editing is not only required in a film, editing is also required in a magazine. And then people talk for 1 hour and the essence is hardly 30 minutes, you know. So you need to condense that thing, take the unnecessary thing out, keep the crisper part. So all these theories or montage theories, you should have some idea about that. And also there's a one filmmaker called Mykolas Yancho. Only today some of the students in craft were watching the film called Red Sam. His films is a long duration shots. Very slowly camera moves, and in a film there are 40 shots, sometimes 50, sometimes 60. Okay. There's another filmmaker called I forgot his- Bellatar. No. He's from Greece. His film are also very slow paced shots are there. Theo Angelopoulos films are also very long duration, time wise shots, and they are really complicated in terms of taking. So Theo Angelopoulos, Eternity and a Day, Landscape in the Mist, these are the film. If you watch them, they're very slow in terms of shot taking. But that is his style of filmmaking. Every filmmaker has their own style. Editor cannot create his own style out of away from director's style. Remember it. It is your style of editing has to be in sync with the style of director. You cannot evolve your style of editing which is different from the director. So if you see the Mykolas Yancho's film, if you see the Theo Angelopoulos films, they're very slow. Camera moves over there. There's action happening. Sometimes 2-minute take, 3-minute take, 4-minute takes. Normally not more than 4 minutes, because the camera footage will finish after 4 minutes and few seconds. But these people have specially designed a magazine of 1,000 feet in which you could have a 9-minute shot also. Okay. So normally it cannot be more than 4 minutes, because 4 minutes is 400 feet normally. But normally I'm saying, but these people have got the specially requested Kodak company to come out with 1,000 feet footage, which will be much more higher. So that's another thing. So coming back to questions, question can be anything. So I have just discussed few things with you, and as I said, that the pace, rhythm, cutting on a beat. Sometimes if a song is not cut on the beat, then you can find it out. Cutting on a beat is one of the important thing in a song picturization. In terms of the song edit, in FTI, if the song is not being edited on the beat, then it is considered as a bad edit. So cutting on the beat is a very important part, particularly in a song. Some people break the rules, that's their point. And also various other theories like jump cut, for example. Godard introduced jump cut in Breathless. Breathless is a film in which jump cut people come to know. I mean, of course, this concept was there, but people were not practicing it very often. So why Breathless is considered an important film? So you could talk about about that film, where the jump cuts are happening, and is it working or not. You can have a different opinion also. Not necessarily what Godard did is you have to agree. No, I may disagree also. But when you disagree, you have to have a very strong logic. Why do you disagree? You can't say, okay, I don't like, this is not a personal choice. Though it is a personal choice of the director that he wanted to cut the film like this. Okay. But does it create that effect or impact on the audience which he wanted to? So that is something which is again a domain where this again tangible versus non-tangible.
but you have to explain something. I would recommend that use very limited words to say something. I will say that don't use unnecessarily long sentences. Just be crisp and to the point, so that whatever you said, it will register in the mind of evaluator, rather than talking and talking and talking and talking, and at the end of the day, you don't say anything. You talk, but you don't say anything. So they are not want talker, they want people who will say something in a limited, crisper words. If you have an understanding. If you don't have an understanding, don't try to, I would say, guesswork in the sense, on the spot you are trying to think. On the spot you are trying to think whether it is possible or not. But if you have some doubt that, no, I'm not sure, because this editing, as I said, this is a very gray zone. It is not a black or white. Okay. Now, what kind of gray it is? It could be darker gray. It could be lighter gray. Gray shades are there. When we say gray zone, it means the answer is not fixed. Black is a black and white is a white. But gray is not a gray. Gray could be lighter gray, darker gray. So when you speak about your answers, it has to be very, very specific. They can, what they are going to show. I also mentioned on the day one that you do watch these short films, which they might ask you to edit, or edit in the sense, comment on the editing pattern, or they might ask you to write it down. Probably that would be the better for them to read it, because they will say, okay, you write down, though that is a little headache for them to read it. But it is always good idea to have it written on a Word file and you shoot them back within a 10 minutes time or 20 minutes time, you know. So you have to be ready with your system over there, so that you should be able to easily able to write, send it back via email to the whatever email they will give it to you. Again, there might be some collective interaction. There may be some individual interaction, depend from mindset or the evaluator, how they are looking at the things. So if they want something, but there will not be a group activity, that is for sure. Because in editing is a very individualistic job. You will not find two people's group as an editor. Like music में क्या होता है? नदीम श्रवण. ऐसे कोई आपने कोई editor दो लोगों का नाम कभी नहीं सुना होगा. Editing is one man's domain. Always. Director दो लोग हो सकते हैं, ताबियानी ब्रदर्स है, करस्माकी ब्रदर्स है, ऐसे इंडिया में भी एक दो कुछ है, एक कुछ मर्डर वर्डर टाइप फिल्में बनाते हैं वो लोग, नाम भूल रहा हूँ मैं. वो बॉलीवुड के अंदर दो लोग हैं, they wear the white always. I'm forgetting their name. Anyway, I'll remember. That is only two people I know. Abbas Mastan, correct. Abbas Mastan look like a single name, but actually they are two different people. So in India only this couple exists. I don't know about others, but internationally some people like Kavyani brothers and all those people are there. So it is a very, very much individualistic zone where your own decision either has to match with the director or don't match. As simple as that. So I always say that there are two versions of everything in editing. One is editor's version, like we used to have a fight in the among the students when they will edit their diploma projects. So I realized that this is a nonsense. So what should we do is, then we came out with this solution. Okay, you give a director version to the director, and that is what he will upload on the YouTube here and there. And you make your version, because the footage is there in the computer. So you make your version of the edit and you present that as your portfolio. Don't load it anywhere on the YouTube for the public, only for the limited people where you wanted to show your work as a showreel. But now we have resolved that issue also. We give little input to the direction student so that they can edit their project cut to cut at least. So that dispute is over now. So there can be any kind of question. I have all these questions I have more or less asked in the all those 5 interviews, which I will be sending it to you latest today itself. I will just dig them out if you people have not received it. There are certain videos available on the
Is the date of the FTI is being decided? Not yet. Not yet. Okay. But anyway, they will be declaring within 2-3 days time, because once our result is declared, then they know schedule. They know for some reason they have not declared it, but it will be declared soon. So there will be no clash at all. You may get selected over there also, here also, but only thing is that you need to block the seat first if you get selected, and then they ask the refund. That was a problem last time. Of course, the refund is there, but sometimes there is enough time to choose between this or there, and then accordingly they will figure it out. So all these 5 interviews, as I said, that would give you enough material, but there are some video lectures available on the YouTube related to the editing. Do watch them. Make your small pointer note. See, how do you remember things? I'm telling you the formula. Formula is, if you write down from left to right the whole essay, nobody is bothered. If you remember the point 1, 2, 3. So you know that if you're going to talk about the Yoncho's film, or if you're going to talk about how a pace or rhythm could be created in a long duration shots, okay, then you know that these are the 3 points you would be talking about. Point number 1, point number 2, point number 3. Okay, so you talk about those points, and that's it. So it is always easy to remember the points and elaborate those points into 2 line, 3 line, 4 line, rather than to remember something which is a essay format from one page of the book to another end of the book. So this is in brief. It is 10:42 right now. I can keep going on and on and on, but if you have some specific question, you can ask. There is some chat box, something. Let me just figure it out. Using a desktop, yes, I will use my friend's tab. Sorry, question, what is the difference between pace and rhythm? पढ़िएगा आप उसको, जो इंटरव्यूज हैं उसको पढ़िएगा, मैं आपको दूंगा. जीवन में खुद कुछ कष्ट उठाना पड़ता है, तो उसमें काफी लोगों ने बताया हुआ है. आप उसको पढ़िएगा और अपने नोट्स बनाइएगा. और कोई आदमी? यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है. लाइक TV, this is the interview for the EDM right now, orientation program for EDM from 25th to 27th, और उसके बाद फिर फिल्म के लिए भी होगा. तो ये सर EDM और फिल्म के इंटरव्यू में डिफरेंस रहता है क्या? मतलब EDM में will they be asking about जो web है, series? देखिए EDM जो है ना, बंगाली लोगों ने नया टर्म ढूंढ लिया है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया. अब हर चीज जो है डिजिटल है. करेक्ट? फिल्म तो है नहीं, 35mm फॉर्मेट तो है ही नहीं ना, सब कुछ डिजिटल है. यस सर. बट फर्क थोड़ा सा जो होगा वो होगा टेलीविजन का एस्थेटिक सेंस और सिनेमा का एस्थेटिक सेंस. थोड़ा फर्क होता है. अब मैं आपको बताता हूँ क्या है. अब OTT प्लेटफॉर्म पे आप फिल्म कहाँ देख रहे हैं? जनरली मोबाइल पे. नॉर्मली 80% लोग मोबाइल पे देखते हैं, मुझ जैसे लोग थोड़ा डेस्कटॉप पे देखते हैं. ठीक है, और मुझ जैसे लोग बड़े कम होते हैं, इसलिए डेस्कटॉप वाला जो वर्जन है वो महंगा है. अगर आप सब्सक्राइब करते हो नेटफ्लिक्स वगैरह, वहां 2 ऑप्शन आती हैं कि आप मोबाइल पे देखोगे फिल्म या डेस्कटॉप पे देखोगे. तो डेस्कटॉप वाला महंगा है थोड़ा, लोग मोबाइल वाला लेते हैं, वो चक्कर है उसमें, कुछ पता नहीं क्यों. तो जितना बड़ा स्क्रीन होता है उसके ऊपर छोटी चीज भी रजिस्टर होती है. इफ देयर इज अ लॉन्ग शॉट, फॉर एग्जांपल लैंडस्केप है कोई बहुत लंबा चौड़ा, उसमें एक बड़ी कोई छोटी सी चीज है थोड़ा दूर, उसका साइज जो है, इमेज साइज बड़ा छोटा है, बट वो छोटी सी चीज बड़े स्क्रीन पर आपको नोटिस होगी. समझे मेरी बात? बड़ी स्क्रीन पे आपको नोटिस होगी, बट वो छोटी सी चीज मोबाइल में अगर आप देख रहे हो, और अगर आपका मोबाइल का स्क्रीन भी और छोटा है मान लीजिए किसी वजह से, तो और छोटा हो गया वो. तो OTT के लिए अगर प्लेटफॉर्म पे फिल्म बनाई जा रही है, तो उसमें एस्थेटिक्स में ध्यान रखा जाएगा कि लॉन्ग शॉट के अंदर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज ना हो जो लोगों को नोटिस ना हो. यस सर. भीड़ भड़क्का है तो ठीक है, मारो 200 लोग इधर से भागे, 10 लोग इधर से भागे, 100 लोग घोड़े पे चढ़ रहे हैं, उसमें क्या नोटिस करना है? वॉर सीक्वेंस है कोई, पानीपत वानीपत टाइप कोई फिल्म है, तो उसमें घोड़े पे दौड़ दौड़ रहे हैं लोग इधर उधर, तो उसमें ऐसा कुछ नोटिस करने के लिए नहीं है. बट कुछ ऐसा नोटिस करने के लिए लॉन्ग शॉट में अगर होगा, तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वो रजिस्टर होगा या नहीं होगा OTT पे. अब आप समझे? तो ये
एस्थेटिक सेंस थोड़ा सा शॉट टेकिंग के टाइम पे चेंज हो जाता है। यही चक्करबाजी टीवी में भी है। टीवी तो छोटा सा होता है, तो वहां भी लॉन्ग शॉट वाला चक्करबाजी जो है बहुत कम होता है। टेलीविजन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, मिड शॉट और क्लोजअप में खेल चल रहा होता है। लॉन्ग भी होते हैं बट वो कम होते हैं। लॉन्ग शॉट भी जो है कम होते हैं। सिनेमा में आप कितना भी लॉन्ग शॉट लेते रहो, क्योंकि बहुत बड़ा स्क्रीन है, उसके ऊपर जो लॉन्ग शॉट का मजा है देखने का, वो टीवी में नहीं आता है। आपने कभी ये बात नोटिस की हो कि नहीं की हो, कि लॉन्ग शॉट का मजा है 35 पे जब आप देखते हैं सिनेमा हॉल के अंदर, उसके अंदर जो देखने का मजा है वो आपको टीवी और ये ओटीटी वाले छोटे से मोबाइल पे नहीं आता है। इसलिए मैं मोबाइल पे कभी फिल्म देखता ही नहीं हूँ। मुझे अगर, वैसे मैं बड़ा कम फिल्म देखता हूँ ओटीटी वाली, बट फिर भी जब भी मुझे देखना होता है तो मैं अपना डेस्कटॉप सिस्टम खोलता हूँ और मैं उसमें आराम से बैठ के उसको देखता हूँ। बट बहुत से लोग चलते चलते ही मोबाइल में देख रहे हैं, कोई काम कर रहा है, खाली बैठे हुए हैं, चलो मोबाइल में फिल्म देख लेते हैं। अब गार्ड है हमारे यहाँ पर, गार्ड कोई डेस्कटॉप पे थोड़ी देखेगा, वो तो अपना मोबाइल का बटन दबाएगा, चालू हो जाएगा वहां पे। बहुत सारे लोग हैं जिन पे ज्यादा काम धंधा नहीं है, खाली बैठे हुए हैं, टाइम बर्बाद हो रहा है, तो चलो फिल्म ही देख लेते हैं मोबाइल। तो मोबाइल इज इंपॉर्टेंट गैजेट टू ये, बट फ्रॉम सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू, द एस्थेटिक ऑफ लॉन्ग शॉट एंड एस्थेटिक्स ऑफ ओटीटी इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ टेकिंग। बट वो एडिटर उसमें कुछ नहीं कर सकता। जो फुटेज लाए वही एडिट करूंगा मैं। ऐसा तो नहीं कि लॉन्ग शॉट को तुम क्लोज अप शॉट बना दोगे वहां पे। वो बड़ा रेयर होता है कि उसमें कुछ जूम इन करना पड़ जाए, कुछ गड़बड़ है, शॉट को क्रॉप करना है, कुछ है, तो कभी कभी हो जाता है। बट जनरली लोग क्या करते हैं, शॉट के लेते वक्त ही ध्यान रखते हैं कि अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म है तो इसमें ज्यादा लॉन्ग शॉट वाला चक्कर जो है मत चलाओ। और अगर लॉन्ग शॉट चलाओ भी तो पर्सपेक्टिव वाला होना चाहिए। मतलब पर्सपेक्टिव इन द सेंस कि आपके पास जो लेंस है वो वाइड एंगल लेंस है, बट जो मेन सब्जेक्ट है आपका वो कैमरा से बहुत दूर नहीं है। तो मेन सब्जेक्ट जो एक्शन है आपका वो कैमरा के पास में होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका वाइड एंगल होने की वजह से बैकग्राउंड की जो ब्यूटी है, या बैकग्राउंड का जो ग्रैंडियोर है, या बैकग्राउंड का जो एक प्लेजर है, मान लीजिए कोई फोर्ट है, बहुत लंबा चौड़ा किला है कोई, तो उसका किला तो वो दूर ही होगा, तभी तो पता लगेगा वो किले में कुछ चल रहा है। बट if the character is away from the camera in a wide angle shot, then will not be very much noticeable. So people try to use the perspective so that background is also clearly established. At the same time, the action is also established in the foreground. So that has been taken care at the time of shoot. So even if it is a long shot, आप वो देख रहे हैं वहाँ टीवी के अंदर या मोबाइल में, you will still get the impact of that. तो Yeah, so ज्यादा one फर्क more, नहीं होगा, I one would more. say, ज्यादा फर्क नहीं होगा एज ए एडिटर, बट वो शॉट टेकिंग के टाइम में डायरेक्टर को ध्यान रखना है। सर एक चीज और पूछनी थी कि सपोज इफ दे टॉक अबाउट वेब सीरीज लाइक डू यू वॉच वेब सीरीज एंड ऑल, सो कैन वी टॉक अबाउट वेब सीरीज लाइक मिर्जापुर बिकॉज यू देखिए, नो इट्स नॉट। बात आप कुछ भी करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो क्वेश्चन क्या है कि आप जो बोल रहे हैं उसमें कुछ कहने के लिए भी होना चाहिए। तो लोग बोलते रहते हैं, कहते कुछ नहीं। यू शुड हैव समथिंग वर्थवाइल टू से। पिक अप द मिर्जापुर और पिक अप एनीथिंग, what you are going to talk about is more important. You can pick up anything what you wanted to pick up. बहुत सारी चेस सीक्वेंसेस हैं जो फेमस सीक्वेंस है, समझे कि नहीं? कोई पूछ सकते हैं, कोई कोई चेस सीक्वेंस आपको अच्छी लगी है, बताइए। तो आपको पता है कि अगर फ्रेंच कनेक्शन आपने देखी हो, फ्रेंच कनेक्शन का एक चेस सीक्वेंस बड़ा पॉपुलर है, बट ना तो आपने फिल्म देखी ना आपको पता, तो क्या बात करोगे फ्रेंच कनेक्शन का? तुम कहोगे फ्रेंच कनेक्शन आता होता तो एफटीआई क्यों जाते? अगर फ्रेंच कनेक्शन के बारे में, बट क्वेश्चन क्या है कि तुम गवार आदमी हो, तुमने वो किताब पढ़ी नहीं, काल राइस की जो एडिटिंग के ऊपर किताब है। वो किताब ऐसा तो नहीं लिखा कि भाई एफटीआई जाओगे तभी वो किताब खरीद सकते हो, तो आज भी खरीद सकते हो आप अमेजोन से, तो खरीदने की भी जरूरत नहीं है, पीडीएफ फाइल अवेलेबल है नेट पे फोकट वाला, उसको मारो प्रिंट आउट और पढ़ना चालू करो, बट पढ़ना तो पड़ेगा। तो अब जिसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि जिसने फ्रेंच कनेक्शन का चेस सीक्वेंस नहीं पता उसको उसको एडिटिंग का सेंस नहीं है। हो सकता है आपको कोई और चेस सीक्वेंस अच्छी लगती हो, बट कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा आपको। आपसे अगर कोई पूछा जाए तो कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा उसके। तो उसमें एक प्रोफेसर माथुर का इंटरव्यू है हमारे पास, जो है हमारे जो लेक्चर थे वो 20 लेक्चर्स हैं अलग अलग फिल्मों के, जो प्रोफेसर माथुर एफटीआई में जिन्होंने 20 साल पढ़ाया है, उनको हमने 20 दिन के लिए यहाँ पर क्लास रूम के अंदर बुलाया था, एंड फॉर द एफटीआई क्लासरूम कोचिंग प्रोग्राम, एंड वी रिकॉर्डेड ऑल दोज लेक्चर्स।
तो दे आर द पेड वन, दे आर नॉट फॉर अनपेड। उसके 2-3 शायद जो है वो यूट्यूब पे हम लोगों ने डाले हुए हैं, शायद, पक्का नहीं पता मुझे, बट मोस्ट ऑफ दीज लेक्चर्स आर पेड लेक्चर्स। तो उसमें बहुत सारी एस्थेटिक की चीजें हैं जो डिस्कस की गई हैं। उसमें से एक को हमने इंटरव्यू रिटर्न में कन्वर्ट करके मैगजीन में लगाया हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। तो उसमें मिशन इम्पॉसिबल का एक सीक्वेंस है जिसमें किस तरीके से टाइम एंड स्पेस की बात हो रही है कि आप एडिटिंग के अंदर टाइम एंड स्पेस को कैसे मैनिपुलेट करें। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है कि हाउ टू मैनिपुलेट टाइम एंड स्पेस, और बड़ा इंटेलेक्चुअल सा भी क्वेश्चन है ये, हाउ टू मैनिपुलेट टाइम एंड स्पेस इन एडिट। बट वो होता है, जब आप उसमें अंदर घुसेंगे तो आपको समझ आएगा कि इंटेलेक्चुअल सुनने में लगता है पहली बार, जब आप इसको पहली बार सुनोगे तो बड़ा इंटेलेक्चुअल लगता है, पर जब आप करने बैठोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये चक्करबाजी क्या है। समझेंगे? वो करने वाला चक्कर है। जैसे कभी आप स्विमिंग पूल में देखो, एक आदमी स्विमिंग पूल में एक जगह खड़ा हुआ है, वो पैर को कुछ 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 कर रहा है, बस बात करो। जब आप घुसते हो उसमें पहली बार तो आपसे नहीं हो पाता। आपने अगर स्विमिंग कभी सीखी हो तो स्विमिंग में देखा होगा एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह पे आदमी खड़ा, वहीं खड़ा हुआ और धीरे धीरे बड़ा रिलैक्स्ड है, और वो, बट आप वो जब करने बैठते हो पहली बार तो आपसे नहीं होता। तो उसका, उसमें एक सीक्रेट एक यही है कि ही इज सो प्रैक्टिस्ड दैट मच दैट ही इज नॉट टेंस्ड एंड यू आर टेंस्ड एंड हेंस यू आर नॉट एबल टू डू इट। जैसे साइकिल है, साइकिल पहली बार देखो किसी को 2 पहिए पे चला के जा रहा है, आपको बड़ा, पहली बार जब आप ध्यान से सोचते हो तो आपको बड़ा मैजिकल लगता है वो, बट वो मैजिक आप भी कर लेते हैं कुछ टाइम बाद जब आप सीख लेते हैं। और शुरू शुरू में सीधा ऊपर नहीं चढ़ जाते हो, शुरू शुरू में आप कैंची कट चलाते हो, बीच में से चला के पैर डाल के, गिर जाए तो एकदम से पैर रख लें हम लोग, बट थोड़े दिनों बाद आप धीरे से वो बैलेंस जो है मेंटेन करना सीख जाते हैं, जिससे आप साइकिल पे गिरते हैं। बट जब आप पहली बार साइकिल चलाना चालू करते हो तो बड़ा झंझट का काम है, कैसे उसमें जाके सीधा गद्दी पे बैठ के चलाने लग जाए, कोई पीछे से पकड़ के आपको रखता है, फिर धीरे धीरे आप बैलेंस मेंटेन करते हैं, फिर वो छोड़ देता है आपको। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सो व्हाट आई नीड टू से, इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिसिंग। एडिटिंग जो है उसमें, एडिटिंग इज नॉट ए टेक्निकल कोर्स, ध्यान रखो। अब ये टेक्निकल हो गया, क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर घुस गया। सॉफ्टवेयर ही नहीं आएगा तो एडिटिंग क्या खाक करोगे? बट किसी जमाने में जब ये सॉफ्टवेयर नहीं था तो एडिटिंग कैसे करते थे लोग? तो कट टू कट वाला चक्कर था, समझे कि नहीं? तो एडिटिंग का एक एस्थेटिक सेंस है, और वो डेवलप करने के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अलग अलग टाइप की फुटेज, चाहे वो म्यूजिक वीडियो है, चाहे वो चेस सीक्वेंस है, फाइट है, कमर्शियल फिल्म है, आर्ट हाउस है, अलग अलग टाइप की फिल्में हैं। जैसे मणिकौल का एक फिल्म है उसकी रोटी, बड़ा बोरिंग फिल्म है, वो लोग सो जाते हैं उस फिल्म में। एफटीआई में एक जोक है कि वो फिल्म जब चल रही होगी, अभी आप टॉयलेट के लिए जाओगे तो जब वापस आओगे तो वो फ्रेम वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं होगा उसमें। बट वो जमाने में लोगों कुछ बना बनू लिया लोगों ने। आज ऐसी फिल्म बनाओगे तो यूपी बिहार में लोग फाड़ देंगे स्क्रीन, पहली बात तो रिलीज ही नहीं होगी, तो सो जाएंगे, सीट फाड़ देंगे, पैसे वापस करो हमारे, क्या बना दिया। बट वो सब फिल्में रिलीज नहीं हुई कभी सिनेमा हॉल में, उस जमाने में भी नहीं हुई, बट किसी ने प्रोड्यूस की तो किसी ने बना दी। सरकारी पैसा था, फूक फाक दो, कोई बात नहीं, अपनी जेब से लगाओगे तो नहीं होगा ये। Sir, I have few questions. बोलिए। Sir, when we are talking about our favorite editors and their works, so how many films should we prepare for? इसका If we आंसर are ये है, इसका आंसर ये है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ पॉइजन इज रिक्वायर्ड टू डाई? बताइए, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम? one is enough. 1 ग्राम इज इनफ, बात खत्म। And one editor or more than one editor. देखिए क्या होता है, थोड़ा सा फर्क है उसमें। अभी कुछ लोगों का काम पॉपुलर हो जाता है, कुछ लोगों का काम पॉपुलर नहीं होता है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो भी सिनेमा हॉल पे फिल्में रिलीज होती है वो सारी ही वेल एडिटेड फिल्में होती है। उसमें किसी को नेशनल अवार्ड मिल जाता है। अब आप बोलोगे जब सब वेल एडिटेड फिल्म है तो सबों को नेशनल अवार्ड क्यों नहीं मिलता? सबको मिलना चाहिए फिल्म फेयर अवार्ड भी, जब वेल एडिटेड सब फिल्में हैं। बट कुछ एक जगह जो है, कुछ एक वो एक्सपीरियंस के बाद आएगा आपको कि वेल एडिट तो पब्लिक के लिए है, वो जो है वेल एडिटेड तो पब्लिक के लिए। अब मैं देख रहा हूँ कोई सिनेमाटोग्राफी को फिल्म किसी को देख रहा हूँ तो मुझे उसमें बहुत सारे फ्लॉ नजर आते हैं। यार ये लाइट रखी हुई है इसने, ये लाइट तो यहाँ से आ रही है, बड़ा ज्यादा है, बैक लाइट तो बहुत ज्यादा है, ये दिख ही नहीं रहा, बर्नआउट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं पकड़ रहा हूँ। तो जो एडिटर फिल्म को देख रहा होता है वो इन्हीं चीजों को देख रहा होता है, पेस है, रिदम है, कट ठीक से था कि नहीं था, जर्क तो नहीं है उसके अंदर, एट द एंड ऑफ द डे इज अ जर्क, यू नो।
whether it is smooth or not, whether it gets noticed or not. बहुत सी चीजें होती हैं, वो जब वो एक एडिटर देख रहा होता है उसको पकड़ में आती है, उसको लगता है नहीं यार ठीक से नहीं किया एडिट, बट आम पब्लिक को नहीं पकड़ में आती। आम पब्लिक जो है वो केवल देख रही होती है शाहरुख खान को, सलमान खान को, कटरीना कैफ को, उनको एडिट वेडिट से ज्यादा मतलब नहीं होता है कि एडिट ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। बट जो लोग देख रहे हैं हम जैसे, वो तो ये सब चीजें देख रहे हैं कि एंगल ठीक नहीं लिया इसने बर्नआउट हो गया, पीछे फेस बहुत डार्क चला गया, बैकलाइट ज्यादा हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीजें देख रहा होता है आदमी उसके, ब्लू ब्लू ज्यादा कर दिया इसने, समझे कि नहीं, ग्रे बहुत ज्यादा हो गया है, स्काई बर्नआउट हो गया है, बहुत सी चीजें देख रहे होते हैं, कलर करेक्शन ठीक से नहीं किया इस गधे ने, बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं। और जो पब्लिक देख रही होती है, पब्लिक को इन चीजों से ज्यादा लेना देना, पब्लिक के लिए सब फिल्में वेल एडिटेड होती हैं, वेल शॉट होती हैं, वेल साउंड कंपोज होती है, बट एज ए प्रोफेशनल आप पकड़ लेते हो। आप जो है, मैंने फेसबुक पे बहुत सारे फोटोग्राफ देखे लोगों के, बड़े वाहियात फोटोग्राफ होते हैं, नीचे लोग लिख रहे होते हैं, लड़कियों के फोटोग्राफ पे ज्यादा लिखते हैं लोग, वाओ वंडरफुल अमेजिंग गॉर्जियस, महावाहियात किस्म का फोटोग्राफ। कल मैंने एक फोटोग्राफी की लड़की कलकत्ता की, जिसको मैं जानता हूँ, ढंग की फोटोग्राफ खींचती है, वो अपने भी खिंचवाती है, उसने बड़ा महावाहियात किस्म का फोटोग्राफ रात को लगाया हुआ था। तो मैंने उसके नीचे लिखा कि आर यू गिविंग ऑडिशन फॉर ए हॉरर फिल्म हीरोइन, क्योंकि इतना भयानक वो फोटोग्राफ था कि वो हॉरर फिल्म के लिए ठीक है। तो मजाक में मैंने वो बात बोली कि बड़ा घटिया फोटोग्राफ है ये, बट अगर किसी को बोल दो घटिया फोटोग्राफ है तो पीछे पड़ जाते हैं लोग तुम्हारे। तो मैंने अभी लोगों को बोलना बंद कर दिया है कि तुम ये वाहियात किस्म के फोटोग्राफ तुमने लगा रखे हैं यहाँ पर। किसी की खोपड़ी से पीछे से एक बिल्डिंग निकल रही है, डंडा निकल रहा है किसी की खोपड़ी में से, किसी के नोस्ट्रल दिखाई दे रहे हैं, और नीचे लिख रहे हैं लोग वाओ अमेजिंग ब्रिलियंट, समझे क्या नहीं। अब किसी को ये बोलो कि ये लोग जो है गधे हैं, तो बोलेंगे तुम ही सारा समझदार आदमी, ये सब गधे हैं, तुम समझदार हो। तो आपने अगर किसी की टाइमलाइन पे जाके कुछ लिखा, तो इसका मतलब मेरे लिए क्या है कि मैं उस आदमी को वैल्यू दे रहा हूं, मेरे पास इतना टाइम है बकवास करने के लिए, 2 सेंटेंस लिखने के लिए। आपने बटन भी अगर किसी की टाइमलाइन पे जाके किसी फोटोग्राफ को दबाया, तो आपने उस आदमी को एक वैल्यू दी। मेरे लिए उसके बटन को दबाना या उसकी टाइमलाइन पे जाके कुछ लिखना, उसको इंपॉर्टेंस देना, इसलिए मैं हर आदमी का फोटोग्राफ पे बटन नहीं दबाता हूँ, हर एक आदमी के टाइमलाइन पे कुछ लिखता नहीं हूँ, अनटिल अनलेस मुझे किसी से भिड़ना होता है। जब मुझे भिड़ना होता है तो फिर मैं चालू हो जाता हूँ। तो खैर व्हाट आई एम और सेइंग, सर हाँ, तो उसमें सर वन जरूरी मोर नहीं है क्वेश्चन। आप कोई एक फिल्म का आइडिया ले सकते हो, किसी 2 फिल्म का आइडिया ले सकते हो, टाइम आपको ध्यान रखना है, आपको दिया जाएगा 10 मिनट 5 मिनट, उसमें जो भी बोलना है बोलो, फिर बेल बज जाएगी, फिर आगे बोलो। सर आप पहले वो डिस्कस कर रहे थे कि क्योंकि एडिटिंग इनविजुअल आर्ट है, उसको मतलब जैसे सिनेमेटोग्राफी को हम लोग जज कर सकते हैं, वैसे उसको जज नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं। हाँ मतलब इनविजिबल इन आर्ट है, रेट्रोस्पेक्ट। यस इनविजिबल आर्ट है, बट उसको भी जज किया जा सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, हम लोग, हमारे यहाँ के एक डायरेक्शन का स्टूडेंट है, उसने एक बहुत खतरनाक वो ग्रेट सिनेमा नहीं है, बट एक अच्छी फिल्म है, पब्लिक सर्विस एड फिल्म है, बड़ी सिंपल सी, ठीक है जी। उसने वो फिल्म जो है 4.5 मिनट का बनाया एडिट करके। मैंने वो फिल्म 4.5 मिनट की देखी, मुझे समझ आ गया इसको मैं 1.5 मिनट काट सकता हूँ। तो हम वो 4.5 मिनट का फिल्म एज ए एक्सरसाइज इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट को देने के लिए कि हाउ यू विल मेक दिस फिल्म एज ए क्रिस्प। तो लोग उसमें से 1 मिनट उड़ा देता है, कोई आदमी 40 सेकंड उड़ाता है, कोई 1 मिनट 10 सेकंड उड़ाता है, हर आदमी अपने अपने तरीके से उसको एडिट करता है, और अपने अपने तरीके से वो ठीक भी है, बट मेरे हिसाब से उसके अंदर 1 मिनट 32 सेकंड उड़ाए जा सकते हैं, और मैंने उड़ाए हुए हैं, और मैंने उसका एक अपना वर्जन बनाया, अपना वर्जन। हर आदमी अपना अपना वर्जन बना लेता है उस 4 मिनट की फिल्म में से। तो सर जब एडिटिंग का बात हो रहा है, तो मतलब कोई स्पेसिफिक कट हम लोग बात कर सकते हैं, या पूरा ओवरऑल स्टोरी, या कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस, मतलब कितना डिटेल बात में? तो होनी चाहिए वो पर्टिकुलर चीज की होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे कमरे की बैकग्राउंड और आपके कमरे की बैकग्राउंड में क्या फर्क है, बोलिए। सुनने रहा है आपको? यस सर। धृतराष्ट्र की संतान हो, दिखाई दे रहा है? बताओ क्या दिखाई दे रहा है? कि सर मेरा आप जो रूम है उसमें पीछे ग्लास पैनल लगे हुए हैं, उसके ऊपर जो फ्लेक्स है उसमें फिल्मों के पोस्टर चिपके हुए हैं।
आपकी बैकग्राउंड में कुछ ग्लास व्लास लगा हुआ है जिसमें फिल्मों के पोस्टर लगे हो? नो नहीं, सर। मेरे पीछे एक टेबल लैंप है और राइट साइड में एक डेस्कटॉप सिस्टम है। आपके उसमें लगा हुआ है कोई डेस्कटॉप सिस्टम और टेबल लैंप? नहीं लगा। मेरे पीछे एक टेबल रखी हुई है और उसके साइड में एक चेयर भी है। तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक, you have to be very specific in your answer because you are being given a allocated time. तुम वहां चाय की दुकान पे गप मारने नहीं बैठे हुए हो, बकवास करते रहो 1 घंटे तक और उसके बाद चाय पी के बोले हाँ चलो अब थोड़ा आराम से जाके कुछ किताब पलटते हैं। वहां पर आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपके पास कितना टाइम है, उस टाइम में आप कितनी ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, सारा खेल वो। ओके सर। अब आप 10 फिल्में बताओ, 5 बताओ, 2 बताओ, 1 बताओ, पर नेम ड्रॉपिंग नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 बड़े बड़े नाम फेंक फांक दिए उसके बाद पता लगा बताया तो कुछ है ही नहीं। हमारे गुरुजी थे मतलब अभी नहीं है, ब्रजेश्वर मदान, हिंदुस्तान का पहला आदमी, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, हिंदुस्तान में पहला आदमी जिसको सिनेमा के अंदर नेशनल अवार्ड राइटिंग ऑन सिनेमा मिला था इन हिंदी लैंग्वेज। मदान साहब का एक आर्टिकल है कि बोले तो बहुत, उसका टाइटल है बोले तो बहुत कुछ कहिए भी। बोले तो बहुत कुछ कहिए भी। तो वहां कुछ कहना है, बोलना नहीं है। 40 में से 30 लोग बोलते रहते हैं वहां वो बाहर हो जाते। 10 लोग जो काम की बात करते हैं वो लोग अंदर हो जाते। और वहां कोई एक्टिंग का कोर्स नहीं है कि तुम्हारी शक्ल इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, थोड़ा ठीक ठाक सी लड़की दिख रही है, वो सब चक्करबाजी नहीं है, समझे नहीं? ये एडिटिंग का कोर्स। तुम्हारी शक्ल की कोई वैल्यू नहीं है। शक्ल को चाहे बच्चा, छोटा बच्चा देख के डर जाए रात को, ऐसे आदमी को भी एडिटर बना सकते हो। क्या होगा कि डर जाएगा बच्चा तो तभी डरेगा ना, उसको देखेगा। जब वो अंधेरे कमरे में बैठ के अपना स्क्रीन पे सर फोड़ता रहेगा तो उसको कौन देखेगा? कोई नहीं देखने वाला उसको। एडिटर इज ए जॉब ऑफ ए फेसलेस पर्सन। यू मे नॉट लाइक इट बट आई हैव टू से इट। अभी थोड़ा फेसबुक आ गया तो आप लोगों की शक्लें पहचानने लग गया है। किसी जमाने में पता ही नहीं होता कौन क्या है एडिटर, नाम सुना होता है, अच्छा ऐसा कोई आदमी है। Same is also with a cinematographer. It is also a faceless profession. Same is also valid for a sound recordist. तो आप गिने चुने शब्दों में काम की बात करेंगे और अगर गैस कर पा रहे हैं ठीक से तो आप करेंगे, गैस नहीं कर पा रहे हैं तो गैस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जो डोमेन है ये ग्रे जोन है। ये जो एडिटिंग का जो डिस्कशन है ये ग्रे जोन में डिस्कशन है। करना भी है और करा नहीं जा सकता। कुछ चीजें हैं। अब मैं आपसे पूछूं बताइए मीठा क्या होता है, बताओ मीठा कुछ होता है, बताओ क्या होता है, बताओ। तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसको, बट आप किसी को बता नहीं सकते। आप उसको बोल सकते हो कि मीठा क्या होता है, आप ये लड्डू है इसको खा लो, आपको पता लग जाएगा। यही कह सकते हो ये बर्फी है, मीठी है, खा के देख लो। बट बोले नहीं मैं खा तो नहीं सकता, बट आप बताओ कैसी होती है, मीठा होता क्या है बताइए आप। तो दीज आर द एक्सपीरियंस ऑफ योर सेंसेस। एडिटिंग भी सच्चाई यही है कि इट इज ए एक्सपीरियंस ऑफ सेंसेस, कि ये फास्ट कट है या स्लो है। एक आदमी चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, अरे भैया कितनी देर तक दिखाओगे चल रहा है वो। अभी एक एफटीआई है कि आदमी की मैंने फिल्म देखी यहाँ पर इंडिया हैबिटेट सेंटर, ठीक है, उसमें भी यही चक्कर था एक आदमी चले जा रहा है, 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 फिर वो मुड़ा, लेफ्ट में गया, लेफ्ट में गया, लेफ्ट में गया, फिर वो सीधा आगे चलता गया। ऐसे एक आसाम का डायरेक्टर था, उसके बारे में किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था और बोला बहुत अच्छा फिल्म मेकर है, ये वो है। तो मैं गया गर्मी में उसकी फिल्म देखने, तो उसमें भी वही होता था। खेत है, उसमें वो लड़की और उसकी मदर चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चलते रहे 5 सेकंड तक, फिर 5 सेकंड के बाद फिर लेफ्ट में मुड़े, फिर चलते रहे 5 सेकंड, फिर चले 10 सेकंड हो गए, ये शायद 15 हो गए होंगे, फिर वो आगे चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, वो एंड तक चलते रहे वो लोग। तो 40-45 सेकंड जो है वो चलते ही रहे खेत में।
अब वो फिल्म मुझे दे दोगे एडिट करने के लिए तो मैं तो उड़ा दूंगा उसको ठक। अगर वो फिल्म एडिटर को दे दो कि इसको थोड़ा क्रिस्प कर दो, वो 90 मिनट की फिल्म 30 मिनट की काट देगा। 90 मिनट की फिल्म को 30 मिनट में काट के दे देगा। तो मुझसे किसने पूछा बाद में कि फिल्म कैसी लगी, मैंने कहा इट वाज सपोज टू बी अ शॉर्ट फिल्म, somehow they made a long film out of it। मतलब वो फिल्म जो है 30 मिनट का फिल्म है, तुमने 90 मिनट का फिल्म बना दिया है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो वो सब नहीं चलता। तो ऐसी फिल्में सिनेमा हॉल पे रिलीज नहीं होती हैं, रिलीज होती है लोग सो जाते हैं। बिहार यूपी में कहीं दिखा दो, सीट वीट फाड़ के आ जाते हैं लोग गुस्से में, अरे साला धोखा दे दिया है हमको। समझे कि नहीं? तो वो सब नहीं चलता है वहां पे। ये आर्ट हाउस में इधर उधर फिल्म फेस्टिवल में चल जाता है, एसी में लोग आते हैं, थोड़ा बीच में सो जाते हैं। मुझे ऐसे लोग थोड़ा बीच बीच में जाग जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर जाग जाते हैं, तो वो सब चलता रहता है। बट ये सब नहीं होगा। ये जो 30 सेकंड तक लोग चले ही जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, खेत में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, 30 सेकंड बहुत लंबा टाइम होता है। वो तो 30 सेकंड नहीं, शायद 1 मिनट का शॉट रहा होगा। So I do not want to disappoint these people because I am no more 25 years old. When I was 25, I was the nasty person under the sun. But FTI में एक जोक है, डिप्लोमा फिल्म के बाद हम लोग एक डिप्लोमा फिल्म देख के निकले और किसी ने मुझसे पूछा कि हाउ इज द फिल्म। तो एक बहुत फेमस बुक है जेम्स मोनाको का, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।